way for doing. There are ways for it. But I know, you guys are only starting off on jam, you'll learn as you live. It's a bit teeny, polka dotted bikini, the topic goes to cost of start speaking now. My girlfriend was wearing an itsy bitsy teeny weeny polka dotted bikini while she was strolling in the central. Yes, strolling. Yeah, strolling. And for instance, that wife for free, give up the right. It remains with those two, Akshay. Itsy bitsy teeny weeny polka dotted bikini for the remaining 33 seconds. Start speaking now. Our school made an option for us to wear an itsy bitsy teeny weeny polka dotted bikini in the summer. You might do that, yes. He- Not pitching that. No, he had not paused. In fact, he was going very, very strong as to how the Allahabad summer. 14 more seconds to go. Itsy bitsy teeny weeny polka dotted bikini, praying to the skies. Start speaking now. This summer uniform would not be very popular amongst the boys as they would not like to wear a bikini to school. The girls, obviously, if they wore such a thing, all the boys of St. Joseph's would be in St. Mary's. But this was not the case. The summer uniform. Yes, that's it. And now, the last topic of the day. Think about it. No, this is something that you guys don't get to feel when you are still in school. It's been almost 28 years, 29 years. Goodbye school days. Goodbye school days, gone and fled. Goodbye school days, gone and fled. Goodbye school days, gone and fled. Start speaking. Goodbye school days, gone and fled. Start speaking now. Goodbye School Days, Gone and Fled was the name of a poem which Mr. Wordsworth Yes, Poem, not poem. right. Gone and Fled was a book written by an Yes, what He has mentioned book in this. that is right. Book has already been mentioned just now. This is the previous format. The format. Year of my passing out. This was the 250th year of our school celebration and father called all of us. The father of that time was Mr. Father. First, Yeah, it paused because he knew that he committed a grammatical error. The father of that time was right. my Yes, friend, yes, I mentioned. I, the repetition of the word I. please repeat the topic. Sorry, both to Akshay. Goodbye school days, gone and fled. Yeah. Goodbye school days, gone and fled. Start speaking now. Goodbye. So that's it. With this, we come to the end of our jam. Father, there's a tradition for announcing the jam results on the stage itself. So if you would permit, we'll just quickly total up the points and announce the results. I hope all of you have enjoyed. I remember last time I had made a request. Know that अनुभव राजशेखर को दिया गया विषय है अभी आ जाएगा इनका विषय है घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है अनुभव राजशेखर का विषय है घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है और भी कोई बैठिए बोलना आरंभ कीजिए एक बार की बात है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठकर शोर के तीक्ष्ण प्रभाव को निहारते हुए मैं ये सोच रहा था कि खाकरा खतरे के निशान से ऊपर है। खाकरा जो कि खाने की चीज है, मुझे लगता है बहुत ही स्वादिष्ट होती है और उसका नाम ही कुछ ऐसा है कि जैसे लगता है टॉपिक ऑलरेडी टाइम आ गया विषय ऑफ द टॉपिक। हाँ डिविएशन मैंने कहा था घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है विषय जाता है बचे हुए चंद सेकंडों के लिए मेरे मित्र क्या नाम है श्री मिश्रा के पास श्री मिश्रा का विषय है घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है बोलना आरंभ कीजिए। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, ये एक कहावत है जो मिस्टर श्यामा नारायण ने अभी ही कही थोड़ी देर पहले। मैं चाहता हूँ वो आपके आपत्ति है आपत्ति उसने कहा कि
आपने कहा ये तो आपकी आपत्ति सर्वथा अमान्य है। इन्होंने बोलते समय किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की थी, इसलिए विषय इन्हीं के पास रहता है। अपने सारगर्भित विचारों को प्रयुक्त और प्रस्तुत करते हुए विषय पर बोलना आरंभ कीजिए। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है एक किताब लिखी है जो अनुभव राजशेखर के द्वारा है। वो किताब आज आपत्ति आया है, इनकी आपत्ति आई है। हाँ बिल्कुल, पॉज क्या होता है? सर ये जो है विरमित हो गए। और क्या मतलब, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि हिंदी छड़का में हिंदी भाषा से इतर किसी भी अन्य भाषा के प्रयोग के शब्दों का प्रयोग सर्वथा वर्जित है, जिसके लिए आप दंड के हकदारी होंगे। चलिए, विषय आपके पास जाता है, घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है। बचे हुए मान लीजिए कि 15 सेकंडों के लिए बोलना आरंभ कीजिए। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है ये। जब हम इस पे नाच करेंगे तो हम वो आपत्ति अमान्य। जब वो कहना बोलना आरंभ कीजिए। घाघरा खतरे की निशानी है, ये हम सब जानते हैं। हम घाघरा पहन के नाचते हैं तो हम जीत सकते हैं। विषय से बाहर जा रहा है। इनका कहना है कि विषय से विचलन, विषयांतर या विषय से विचलन आपकी आपत्ति मान्य है। यहाँ पे लगता है अंकों का निर्धारण भी हो चुका है। बचे हुए मात्र 10 या 7 सेकंडों के लिए घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, बोलना आरंभ कीजिए। घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है ये किताब अनुभव राजशेखर ने नहीं लिखी है। आपत्ति इसके दोहराया है। जी हाँ, इन्होंने अनुभव राजशेखर के बहुमूल्य विचारों को टोपो किया है, उसकी चोरी की है। इसलिए बचे हुए 7 सेकंडों के लिए घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है, बोलना आरंभ कीजिए। घाघरा खतरे के ख्याल से ऊपर है। आपत्ति आ गई, पहले ही आ गई। हाँ बिल्कुल, ख्याल बोला, विचार बोल सकते थे, विचार बोल सकते थे। चलिए, बचे हुए 3 सेकंडों के लिए घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है ये घाघरा मिनट कम। Three-way tie. Father, do we need to break the tie? There's a 3-way tie for the second place. Do we need to break the tie? If we need to break the tie, then we can have half a minute or 1 minute. All right. May I call up on the stage? I'll announce Akshay Chaudhary is a runaway winner with 6 marks. So Akshay is going to participate in this tiebreaker one topic round that we are going to have. J.P. Srivastava, Kaustubh Rai and Soumya Mishra, may I call you up on the stage once again. All of you are tied at +2 each. May I have J.P. Srivastava, Kaustubh Rai and Soumya Mishra up on the stage real quick. All the 3 participants, kindly come onto the stage immediately. Where are you? Kaustubh, BHS. And Soumya Mishra. Yes. Where's Kaustubh gone? BHS. Would someone from the BHS team send for Kaustubh? He's here? Come this way. There's a 3-way tie and therefore we are going to have just one single topic. And the topic appropriately should go to a lady. Let's give it to... Why should it go to a lady? Any argument and I'll give you a minus and there will be no need for this round. It should go to a lady. So this goes to my friend from SMC, Jayati, and your topic is Sheila and Munni go take a walk. Sheila and Munni go take a walk. Lady Gaga is chock-a-block. Your topic is Sheila and Munni go take a walk. Lady Gaga is chock-a-block. Start speaking now. This was the article which I read yesterday on the newspaper. It was a wonderful Pause. Yeah, she paused. Absolutely right. Sheila and Munni go take a walk. Lady Gaga is chock-a-block. Start speaking now. Sheila and Munni go take a walk. Lady Gaga is chock-a-block.
That's what my father said when he read the newspaper article pertaining to Lady Gaga. Yes, what said? He's speaking the same newspaper article.